Hello, hi students, myself Shivani Sharma and I am biology tutor over there. So today we are going to talk about the animal kingdom. I know most of the students found it so boring, but according to the NEET prospectus, it is very important because every time they will ask about the 3-4 question of these chapters. तो NEET के according to it is like very important. I know examples रटना पड़ता है, blah blah blah, but I make sure I will let you some tricks so this chapter will not be hard for you and you found it's very easy. So let's start with the chapter. Here are the pictures of the some beautiful animals. So when we are talk about the animals, तो we are like हमारे दिमाग में click होता है animals में lion, rabbit. See ourselves, we are the most social advanced animals over there in the earth. So let's start with the chapters. Animal kingdom, and we are called as kingdom Animalia. It is the largest kingdom, and if we are talk about the some basic properties of the animals, like what comes in your minds? First of all, we all are multicellulars. We are all are made up of multiple of cells. हम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो एक सिंगल सेल से बना होगा. We are all made up of multiple of cells, and then हमारे में complexity आता गया, and then we got this, and तब मैं तुम्हारे सामने अर्थ पे इस तरीके से खड़ी होती हूँ. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एनिमल्स की, इट इज हेट्रोट्रॉफ्स. व्हाट डज दैट मीन? हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर आवर फूड. हम जादू जैसे या प्लांट्स जैसे अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वी कांट डू फोटोसिंथेसिस. वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दी सम अदर्स, लाइक वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन आवर मिल्क रिक्वायरमेंट और आवर एग रिक्वायरमेंट फॉर द एनिमल्स. वी ऑल आर रिक्वायरमेंटेड फॉर द pulses for the plants and all. And third is holozoic. We all have the properties of holozoic. What does that mean? Holozoic means we ingest our food in the complete mode. When we say about the holozoic, it is the mode of the nutrition. That means अगर हम कोई भी food अपना ingest करते हैं तो हम उसे proper assimilate करते हैं, utilize करते हैं, then we ingest it out. तो इस ऐसे mode of nutrition को बोलते हैं holozoic. Holo means बेटा complete mode of nutrition. complete mode में अपने food को acquire करना, उसे enhance करना. Kingdom Animalia divided into the 2 categories. First is subkingdom Parazoa and the another is subkingdom Eumetazoa. See beta, in biology terms are very important. If you learn about the terms meaning, then it is very easy for you. आपको रट्टा लगाने की भी नीड नहीं है. If you don't need the meaning, if you don't need to know meaning of the like word meanings, तो आपको लगेगा यार कितना burden हो गया है, क्या करे क्या नहीं. तो if you clear your terms in your mind, then it will be very easy for you. First of all, we are talking about the subkingdom Parazoa. Parazoa, what does that mean? As I talk about the word meaning, so let's start with the word meaning. Parazoa. P stands for primitive. Primitive means जो सबसे पहले आए. Primitive zoans. They have multiple of cells. प्रिमिटिव अर्थ पे सबसे पहले आया. मतलब लाइक बेटा देखो, जब इवोल्यूशन हो रहा था, व्हेन इवोल्यूशन स्टार्ट्स, तो पहले क्या था अर्थ पे? सिर्फ केमिकल्स थे. केमिकल्स गॉट एसिमिलेटेड इनटू द सेल्स, देन सेल गेट एसिमिलेटेड इनटू द टिश्यू, टिश्यू गेट एसिमिलेटेड इनटू द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स गेट एसिमिलेटेड इनटू द ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम इज एसिमिलेटेड इनटू द ऑर्गेनिजम्स. हम लोग धरती पे बेटा ऐसे ही नहीं आ गए हैं. हम बहुत सारी स्टेजेस को क्रॉस करके आए हैं. तब मैं तुम्हारे सामने इस अर्थ पे इस तरह से खड़ी हुई हूँ. पहले केमिकल्स हुए होंगे, जाहिर सी बात है, उनमें रिएक्शंस हुआ, रिएक्शंस होके देन फर्दर दे मॉडिफाइड इनटू द टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म. देन मैं इस अर्थ पे इस तरह से इस कॉम्प्लेक्सिटी के सामने आपके सामने खड़ी हुई हूँ. तो सब किंगडम पैराजोआ, एज इट नेम मेंशन, पी स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव. वो अर्थ पे सबसे पहले आए, तो दे हैव ओनली सेल्स इन देयर बॉडी. एंड हमारे पास ऐसा बेचारा ऐसा पुअर फाइलम वी हैव पोरीफेरा. If you want to learn, P for Porifera and P for primitive metazoans. So they have only cells, and example is your Porifera. In this chapter, examples are very important. If you're not able to learn the example, this chapter will totally waste, because इस chapter में से example से related ही questions आते हैं. तो you have to learn the example at any cost. Second, we are talking about the subkingdom Eumetazoa. What does that mean of U means true. Those which have true multicellularity, and these phylums are Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Nematoda,
Escalmantis, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and Chordata. By one and one, we are talking about the basis of classification. Why we need to do classification of the organisms? हमें classify करने का need ही क्यों पड़ा? हम ऐसे भी तो animals को कर सकते थे. अगर सपोज करो अगर मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑफ पेन्स हैं तो हाउ कैन आई डिफरेंशिएट इट इन देम. अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक रेड कलर का या ब्लू कलर का पेन पिक करके लाना है तो यू वेस्टेड योर टाइम. इफ आई अरेंज इन देम मैनर कि लाइक ये रेड कलर का पेन इधर लग दिया, ब्लू कलर का एंड पिंक एंड देन ग्रीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इफ आई आस्क यू टू पिक रेड कलर पेन तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. यू विल गो एंड गेट टू द पेन टू मी. तो इसलिए हमें ये क्लासिफिकेशन करने की नीड पड़ी. If in future we will discover some other animals, so in what phylum and in what category we are putting our animals, so on that way we have the basis of classification of the animals. So we have different type of categories on the basis of classification. First, level of organization. Second one is germ layer. Third one is your body plan. Fourth is your coelom, symmetry, segmentation, and notochord. By one and one, we will discuss about each and everything in the details. So no need to be worried. ऐसे घबराना नहीं है because हम एक एक करके पढ़ेंगे and it will be very easy for you. मैं आपको साथ के साथ ट्रिक्स बताती रहूंगी how to learn the examples. देखो बेटा यहाँ पे मैंने बोला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने इसलिए करा. सपोज करो अगर मुझे क्लास में बोला जाए कि मैम आप स्टूडेंट्स को सेपरेट कर दो तो हाउ आई एम गोना सेपरेट द स्टूडेंट्स. मैं उनको उनके मार्क्स के बेसिस पे सेपरेट करूंगी कि 650 वाले इधर आ जाओ, 450 वाले इधर आ जाओ, 500 प्लस आ जाओ. तो मेरा मोड ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? माई मोड ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज देयर मार्क्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने भी ये क्लासिफिकेशन ऑप्ट किया. लेवल, जर्म, coelom, symmetry, segmentation, notochord, etc. etc. Okay, let's start with the level of organization. As I previously told about you how our body forms. First we have chemicals on this earth. Chemicals got reacted and they get modified into the cells, and cells get modified into the tissue. Tissue got modified into the organs. Organs get modified into the organ system, and organ system से हमारा ऑर्गेनिज्म बना. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल ऑफ अ प्राइमरी किड बेबी. हम बेबी को स्कूल में एडमिशन कराते हैं जो प्राइमरी किड का बच्चा होता है. सो हाउ वो पहले क्या सीखता है? वर्ड सीखता है लाइक योर अल्फाबेटिकल लेटर ए बी सी डी एंड देन फिर उसे अरेंज करना सीखता है, उसके वर्ड्स बनाता है CAT कैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड देन वो उसे मॉडिफाई करके सेंटेंस बनाता है. सेंटेंस से देन वो पूरा चैप्टर टू पैराग्राफ. तो ऐसे हमारी बॉडी मॉडिफाइड हुई फॉर द बेसिक टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी एंड वी आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल इन दिस अर्थ. ठीक है. फर्स्ट वी हैव अ सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Cellular, as its name mentions, cellular, they have only cells. And which phylum have only cells? Your Porifera. And second we have tissue grade of organization. Tissue grade of organization, we have two examples. First one is our Coelenterata and another one we have Ctenophora. Just remember in your mind, whenever you see the Coelenterata, तो वहाँ Ctenophora होगा ही होगा. They are just like a best friends. स्कूल्स में क्लासेस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, हमेशा बॉन्ड करके रहते हैं. तो लाइक दिस ये भी ऐसे है, दे ऑलवेज गॉट अ बॉन्ड. वो एक दूसरे की बैक है. जहाँ Coelenterata दिखे वहाँ Ctenophora होना ही होना है. And the third is your organ grade of organization, that is your Platyhelminthes. It is very important. They will ask you a question for the very first time, which phylum has seen the organ grade of organization, that is your Platyhelminthes. And organ system, we have organ system में examples है Escalmanthus up to Chordata, and that is your example as मैंने जो अभी तुम्हें समझाने के लिए explain किया था. Second, we have germ layer. Germ layer, what does that mean? Let's understand by this image. We have a sperm and ovum. Sperm we got from our father and ovum we got our mother. They got fused into the zygote. Zygote too we have a different type of a cleavage division, and different type of cleavage division happens in the fallopian tube. Zygote too we got 8 cell stage. 8 cell stage too we got 8 to 16 cell stage, which is your morula. Morula is like a mulberry shaped structure, and then we got blastula. Blastula is a 32 cell stage, and
here is the cross section of the blastula, and this also see the blastocele cavity and blastula to our gastrulation. This is the dead stage where we have to find the germ layer. इस स्टेज पे हमें gastrulation पे हमें germ layer देखने के लिए मिलता है. इस इमेज को लगाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है that I can explain you कि germ layer बनती कहाँ पर है और होती कहाँ पर है. तो germ layer is formed in your gastrulation stage बेटा. On the basis of the germ layer, we have divided animals into the two categories. First one is your diploblastic and another one is your triploblastic. Diplo, as its name mentioned, diplo means duplicate. They have only two germ layers. First one is ectoderm and another one is your endoderm. They have also a third layer, but it is non-cellular. Ecto and endoderm. As you see in the image, that purple one is ectoderm and then grey one is your endoderm, and this one is your mesoglia, which is your non-cellular. Mesoglia is non-cellular. It is your non-cellular. It is a, देखो, as you see in the image, it is a fluid-like structure. It is fluid-like structure. Fluid-like structure. Or we can say that it is a gelatin or gel-like structure. Gelatin or gel-like structure. So example is our Coelenterata and Ctenophora. देखो है ना बेस्ट फ्रेंड्स, when you see the Coelenterata, Ctenophora भी आ गया. Triploblastic, they have three germ layers. Outer one is your ectoderm, grey one is your endoderm, and pink one is your mesoderm. And these all three layers are cellular beta. These all three layers are cellular. If someone asks you what is the difference between diploblastic and triploblastic, you just say simply diploblastic have two germ layers, which is your ecto and endo, and they are cellular. But they have also another layer, which is your mesoglia. But it is your non-cellular structure. It is a gelatin or gel-like structure. In triploblastic, you have three germ layers, ecto, endo and mesoderm. These all three layers are cellular. बेटा आपने सुना होगा ना, सब बोलते हैं your heart is mesodermal in origin, your brain is ectodermal in origin. What does that mean? That means बेटा your heart has been originated from the mesodermal cell. तो ये signifies है in germ layer का. हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही नहीं रट्टा मारते जाना है. You know कि क्यों है, रीजन क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका सिग्निफाइज क्या है. तो germ layer का सिग्निफाइज ये है. If someone asks you our heart is mesodermal in origin, that means our heart has been originated from the mesodermal cells. Got it? Example is your Platyhelminthes up to chordata. Next we have a body plan. In body plan we have divided into the three categories. First one is your cellular aggregation, another is your blind sac, and another is your tube within tube. We are talking about the first one is your cellular aggregation. As in name mentioned, cellular means they have only cells in their body. Just simply diffusion happens in their cells because beta they don't have any modified structure in their body. So सारा काम किसको ही करना है यार, cells को ही तो करना है. Cell वो लेबर वर्क करेगा. If अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि कौन ज्यादा मॉडिफाई होगा, जिसको सिर्फ एक काम करना पड़ रहा है या जिसके पास हर तरह से सिस्टमैटिक वे है. ऑब्वियसली बात है जो सिस्टमैटिक वे में काम करेगा, जिसके पास हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर बंदा होगा, वो अच्छे से काम कर पाएगा. तो सेलुलर एग्रीगेशन में पॉलीफेरा को ही सब काम करना है, उसको डाइजेशन भी करना है. दे हैव टू डू एक्सक्रीशन, दे हैव टू डू रेस्पिरेशन, सो दे हैव अ बेटा पुअर लेबर ऑफ वर्क. So their only diffusion cells are present in their body, and an example is Porifera because it is the dead phylum which have only cells in their body. They have no other complicity found in their body because they are the primitive type. And another we have blind sac. Blind sac means they have only one opening. ऐसा नहीं है blind बोल रहे हैं तो they can't see like that. No, blind sac means whenever we see blind or blind sac or blind tube in the biology, that signifies beta they have one open end and another end is closed. So blind sac single opening happen in their body as I mentioned in the diagrams. देखो another ending is closed and एक ही ending open है. इधर से ही सारा जो भी ingest करेंगे it will come out that way, and from that opening
opening, it will adjust out everything. Okay, they have only one opening, which and another opening is closed. So single opening that serve as the mouth and serve as the anus. Example is your Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes. Tube within tube means they have two separate openings, one for mouth and another for anus. See, वो पेन्स होता है ना, जो पेन बॉडी होता है उसमें से रिफिल हमें अलग ही विजिबल होता है. अभी तो नहीं है मेरे पास ऐसा, तो जस्ट इमेजिन दैट कि वो वाला पेन है. एक बॉडी के अंदर एक बॉडी का प्रेजेंट होना. Let us understand by the human body. We all have a alimentary canal that starts from the mouth and from the anus. तो बॉडी के अंदर एक बॉडी प्रेजेंट है, ऐसे उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब विदिन ट्यूब. देखो एक बॉडी है बाहर and inside that alimentary canal is present, one single opening for mouth and another single opening for anus. We have two proper openings. As we talk about the human, we have two proper openings, one for ingestion of food and another we have opening for ejection of food. ठीक है, तो two separate opening, one acts as a mouth and another acts as a anus, and an example from Escalanthes up to chordata.